Life on the streets is a battle for survival. It's a test of how well one can survive a harsh and a challenging environment. Even basic public services are absent. Having healthy food is also a problem. Article 21 of the Constitution of India states that no person shall be deprived of his or her life and personal liberty. The Constitution of India, Article 21, Protection of Life and Personal Liberty. No person shall be deprived of his life, personal liberty, except according to the procedure established by law. What the state does not underline is the fact that the word life does not mean mere existence, but also living with human dignity. मेरा नाम नंदलाल है। मैं सेंटरिंग काम करता हूँ। 50 साल से करता हूँ काम, बचपन से एज काम है। बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बच्चों को शादियाँ कर दिए, सब कर दिए, यही काम कर रहे। अभी भी यही काम करते। 400 रुपये मिलते रोज को, काम कर लेते, मजदूरी का काम है। हाँ, गौरी शंकर बस्ती में रहते, बंजारा रोड नंबर 11। कितने बेटे? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, दोनों के शादियाँ हो गए। एक काम में काम करके शादियाँ करे, 250 पैसे में थोड़ा बहुत करके नीचे ऊपर। The Supreme Court made it clear that no single person should die because of not being able to afford a shelter. Hyderabad, the capital of Andhra Pradesh, is a city rich in history, tradition, and culture. But behind the glamour of the city of Nawabs lacks the reality of countless homeless men and women. Poverty is one of the major problems in India. साफिया बेगम मेरा नाम। मैं मारा दो रहमान। काम क्या करते हैं? पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, घर भी अल्लाह में बच्चे कलर काम करते। मैं मारा बच्चे 2 है। 2 बच्चा है, मेरा पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, गरीब काम करके काम खाते, करते। क्या काम करते? झाड़ मारती, पोछ मारती। टेक्निक औरत को रहना है, आदमी बोलना पड़ता है। कुछ भी नहीं है मेरा कने, क्या करना। आज एक पानी के घड़े के अलावा तबीयत ठीक नहीं है। मेरा नाम समीर है। मैं ये इलाके में रहता हूँ। मेरा घर उधर है, उधर बताओ। मेरा घर उधर है और हमारे घर में 5 लोग हैं और एक बहन है, एक भाई है और मैं हूँ और मम्मी और डैडी है। और डैडी रोज़ जाते, मम्मी हाउसवाइफ है। डैडी कलर का काम करते, वो 400 है उनकी रोज़। और हम लोग बचपन से यहीं थे और यहीं रहते। और पहले जो बस्ती में आके बसे तीसरे लोग हम थे यहाँ पर, और ये हमारा एक घर है, हमेशा रहेंगे। हमारी परवरिश सब यहीं हुई और हमारे पूरे ज़माने से हम लोग यहीं है। तो हमारा बोलना है कि हम यहीं रहेंगे। तुम पढ़ते? हाँ, मैं 6th क्लास पढ़ रहा हूँ। मेरी दीदी 9th है, मेरे भैया 7th है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं और डैडी जॉब पे जाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। क्या नाम है तुम्हारा? फरजाना। तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। तुम्हारा? अच्छा, कहाँ रहते तुम लोग? हम लोग गरीब झोपड़ी में रहते हैं मैडम। हम लोग बहुत मजबूर लोग हैं, परेशान हैं। हम लोग को पानी की तकलीफ है, लाइट की तकलीफ है। बहुत झोपड़ी में रहते हैं, बहुत गरीब है। हमारे मियाँ की वॉचमैन है, अभी तो काम भी नहीं जा रहे। परेशान है हम लोग खुद ही, बहुत मजबूर है। बच्चे को पड़ोसी है हमारे, उनके बच्चे को स्कूल में डाल नहीं सक रहे। बहुत परेशान है। आप लोगों से हमारा कुछ कर सकते हैं। हम इतने मजबूर है, हम खाने तड़प रहे। हम लोग इतनी गरीबी है हमारे पास। खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है। ये हमारे पड़ोसी है, उनको 3 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चियाँ हैं, शादी के खल्ला है, शादी नहीं कर सक रहे, पढ़ा नहीं सक रहे, बहुत गरीब है बेचारे।
उनके मियाँ मजदूर है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, दूर दूर से पानी लेके आते हैं। It is the root cause of many socio-economic problems, including population explosion, unemployment, and child labor, the rising graph of crimes. Poverty alleviation should be the main target of the nation, so as to make it a prosperous and developed country. Thus, poverty elimination is a matter of fundamental importance. Poverty implies a condition in which a person finds him unable to maintain a living standard adequate for his physical and mental efficiency. He even fails to meet his basic requirements. Poverty is in fact a relative concept. It is very difficult to draw a demarcation line between affluence and poverty. According to Adam Smith, man is rich or poor according to the degree in which he can afford to enjoy the necessaries, the conveniences, and the amusements of human life. The pathos of Indian story is that 220 to 230 million of Indian population, which constitutes 22% of the total population, is poor as per the findings of the National Sample Survey Organization. This makes India home to the world's largest proportion of the poor. Even if the percentage of the people living below poverty line reduced from 36% in 1993 to 22% in 2004, the problem of poverty is acute in villages. More than 75% of people living in villages. Even prevalence of poverty is not uniform all across India. The poverty level is below 10% in states like Delhi, Goa, Punjab, etc., while it is nearly 50% in socio-economically backward states like Bihar and Orissa. The percentage of poverty fluctuates between 30 to 40 in northeastern states of Assam, Meghalaya, and Tamil Nadu and Uttar Pradesh. There are other dismal facts about poverty in this fourth largest economy of the world on GDP at purchasing power parity. It ranks 126th out of 177 countries listed in the World Human Development Index, and the rate of child malnutrition double than that of the sub-Saharan Africa. The most recent World Bank estimates for India are based on household surveys carried out in 1999 to 2000. It was found that almost 80% of India's population was surviving on less than $2.15 a day or less, and nearly 35% were found to be living on $1.20 a day or less. With such factual and visible evidence enforcing existing bias, the defining element of our economy would remain identified with poor millions. Rather than getting drowned into swirling oceans of data, we need to look into the factors which lead to poverty. Since India is predominantly an agricultural country, it is the largest source of employment. More than 3/4 of their population depend on agriculture for their livelihood. Thus, the situation is bound to change and society will be free from deprivation.